Our today's class is for 11th and subject is geology. Our today's topic is carbonization of fossils. We have already discussed the different modes of preservation of fossils. In our today's class, we will try to understand what is carbonization of fossils, how we can preserve the fossils by the process of carbonization. Basically, carbonization is a process which takes place as organic matter of an animal or organism slowly decays after burial, and only the residual carbon of the organism remains behind. So this happens due to heat and pressure which lay down upon the buried fossil or buried organism or animal or plant. So, during the process of decomposition, the organic matter gradually loses its gases and liquids, leaving only a thin film of carbonaceous material. What happens when you see different animals, or if we see leaves of plants or animals which laid or which dies, then what happens after burial due to sedimentation or after different layers due to heat and pressure laid down on these animals or plants which are buried under this material, the process of decomposition. What happens after process of decomposition? The organic matter gradually loses its gases and liquids, with the result, due to pressure, they are leaving only a thin film of carbonaceous material which is left behind as a remains of plants and animals. One of the example, coal is followed by the same process, and carbonized plant fossils are not uncommon in coal deposits when you see. So, if we easily try to understand what is carbon, it is a simple process. जब हम कार्बोनाइजेशन की बात करेंगे, आसान सा अमल है, प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, ये प्रोसेस जब शुरू हो जाती है, वाक़ा हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है एक जानवर या एनिमल या प्लांट में जो ऑर्गेनिक टाइप का मटेरियल होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिके हो जाता है. जब इसको दफन किया जाता है या खुद दफन हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक से बना हुआ जो भी मैटर है, वो खत्म हो जाता है. विद द रिजल्ट एंड ओनली द रेजिडुअल कार्बन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमेन. जो रेजिडुअल जो कार्बन होता है, कार्बन का रेजिडुअल टाइप मटेरियल होता है, वो पीछे रह जाता है बाकी इस ऑर्गेनिज्म का. ये प्रोसेस हीट और प्रेशर के दबाव या हीट के गर्मी की वजह से, जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से, या ऊपर से रॉक्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल का जो दबाव होता है, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर होता है, ये इसको इस तरह से ये अमल ऐसी है कि ये इस ऑर्गेनिक मैटर को आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज करके इसके जो गैसेस होते हैं या जो लिक्विड्स होते हैं, उनको ये बाहर निकालता है. विद द रिजल्ट ये एक थिन फिल्म बाकी रह जाती है, खुश्क, पूरा हॉल रह जाता है, क्योंकि इसमें से लिक्विड और गैसेस बाहर निकल जाते हैं. बाकी जो रहता है वो कार्बन रेजिड्यू रह जाता है, वो भी बहुत ही थिन फिल्म जैसा रह जाता है. एक फिल्म के ऊपर दूसरी फिल्म, तो वो फिर आगे बढ़ जाती है फिल्म. इसी तरह से जो ये मटेरियल बन जाता है, ये डिकम्पोजिशन के बाद बार बार जब डिकम्पोजिशन होता रहता है, ऑर्गेनिक मैटर
ختم آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے, گیس اور لکوڈس کو یہ ختم کرتا ہے, لوز کرتا ہے. باقی جو رہتا ہے وہ صرف کاربونیشیس میٹیریل کی ایک تھن فلم رہ جاتی ہے, ایک میٹیریل رہ جاتا ہے اس کا. اسی سے ہم ایک ایگزامپل ہماری ہے, اسی سے ہمارا جو کول بنتا ہے ایسی ہی پروسیس سے. وہ کن سے, وہ کاربونائزڈ پلانٹ فاسلز ہوتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ایک کامن کول ڈپازٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, وہی ہمارا کول بن جاتا ہے. یہ کاربونائزیشن کا ایک سمپل سا پروسیس ہے. اس میں سمپل بہت ہی آسان ہے. اینیملز میں یا پلانٹس میں سمپل سا سمجھنا ہے. آرگینک میٹر کو ختم ہو جاتا ہے, ریزیڈیول باقی آرگینزم کا ریزیڈیول کاربن رہ جاتا ہے. اس پروسیس میں کیا ہوا, آرگینک میٹر جو آہستہ آہستہ گیسز اور لکوڈز لوز کرتا ہے. باقی جو تھن فلم رہتی ہے وہ کاربونیشس میٹیریل کی رہتی ہے, وہی آہستہ 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 کول کا شکل اختیار کر لیتی ہے. بہت آسان سا سمجھنا ہے. میں نے اس کو لمبا چوڑا اس لیے بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے گا. بہت ہی آسان کاربونائزیشن آپ نے باقی سبجیکٹس میں جیسے کیمسٹری میں یا باقی سبجیکٹس میں بھی جیوگرافی اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے. So this was all about regarding the carbonization of fossils. This is one of the mode of preservation of fossils.